Welcome back in VV Studies and always be positive. So, we have started chapter number 4, Carbon and its compound. Carbon and its compound. Okay, so today our topic is chemical properties of ethanoic acid CH-3COOH or C2H4 O2. Okay, three properties we have discussed in previous video. So, property 4, reaction of ethanoic acid, reaction of ethanoic acid का फॉर्मूला जरूर लिखेंगे ब्रैकेट में CH3COOH और C2H4 O2 with sodium carbonate. Okay, sodium bicarbonate. With sodium bicarbonate we have done Na2CO3. Okay, reaction of ethanoic acid with sodium carbonate. अभी हमारे पास लेंगे 2CH3COOH ethanoic acid and then sodium carbonate Na2CO3 sodium carbonate. What you have to do, you have to write this in for your understanding. CH3COOH and this is 2 times CH3COOH. Then you have NaCO3. What you will do, this 2 hydrogen and 1 oxygen. This 2 hydrogen and 1 oxygen will give rise to H2O. Then this 2H had gone, this 1 oxygen had gone. What is left? CO2, carbon dioxide, and CH3COO 2Na. So 2CH3COO Na. Okay, it is called sodium ethanoate. Or commonly called sodium acetate. Okay, this is water and this is carbon dioxide. Okay, you have to be specific. This is one reaction. Reaction of ethanoic acid with sodium carbonate will give rise to sodium ethanol plus water plus carbon dioxide. Next property, reaction of ethanoic acid. In previous video we have discussed esterification, sonification reaction with ethanoic acid with sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate, which was producing a CO2 carbon dioxide with brisk effluence, which is used as a test for ethanoic acid. Reaction of ethanoic acid
reaction of ethanoic acid CH3COOH with sodium hydroxide, okay, NaOH. CH3COOH, ethanoic acid, then sodium hydroxide, NaOH, sodium hydroxide. So OH and H and OH will give rise to H2O, sodium hydroxide. OH and H will give rise to H2O, and this sodium will replace H. It will form CH3COO Na, sodium ethanoate, or we can say sodium acetate. Okay, so this is two remaining properties of ethanoic acid. You have 20 seconds, 20 to 30 seconds, please write it. So next we are doing chemical properties of ethanol. Okay, so our next topic is now we have chemical properties of ethanol. CH3 CH2OH, और बॉन्ड दिखा सकते हैं, दिखाने चाहिए तो, और C2H5OH. Okay, first property we have oxidation reaction. But you will write in oxidation reaction. First write ethanol formula CH3 CH2OH or C2H5OH. Okay, when they react with alkaline KMNO4, this reaction you have to write alkaline KMNO4 or acidified K2Cr2O7. इन दोनों में से एक एजेंट लिखेंगे अल्केलाइन KMNO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट. ओके, सो यहां पे लिखते हैं एरो अल्केलाइन
alkaline KMnO4 और acidified K2Cr2O7, okay, plus heat. They will give nascent oxygen from oxidizing agent. It is one of the most important reaction for CBSE board, ICSE board and HBSE board. So oxidation reaction of ethanol, this is ethanol, CH3CH2OH or C2H5OH. Two nascent oxygen will come from alkaline KMnO4 or acidified K2Cr2O7. This is potassium permanganate, this is potassium dichromate, okay, this is potassium dichromate. So it will give CH3COOH. जब आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे पास ऑक्सीडेशन से एसिड बनते हैं, इथेनोइक एसिड, okay, then plus water. So क्वेश्चन क्या आएगा इसका? फर्स्टली व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये आपके पास टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. It is one of the most important reactions. So students, please see. Question will come. How can you convert? Firstly, we will write oxidizing agent. Oxidizing agent two है हमारे पास. Alkaline potassium permanganate. Then we have KMnO4 or acidified potassium dichromate, K2Cr2O7. This reaction is a very important. How can you convert ethanol into ethanoic acid? So this is that particular reaction. How question will come? ये reaction आपको learn रखे हैं. CH3CH2OH और C2H5OH, टू ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ये जो ऑक्सीजन है नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं, मींस फ्रेश बोर्न ऑक्सीजन. This will be provided by oxidizing agent, either alkaline KMnO4 or acidified K2Cr2O7. इसे पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं या पोटेशियम डाइक्रोमेट. ये जो है हमारा इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, ये रिएक्शन आपने लिखनी है. इसका क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेनॉल. आपको सिंपल से ट्रिक बता देते हैं. आपने इथेनॉल का फॉर्मूला लिखना है CH3CH2OH. एरो का निशान वहां पे लिखना है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, इथेनोइक एसिड. एरो के ऊपर अल्केलाइन KMnO4 मींस पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7. ओके, how can you convert ethanol into ethanoic acid? So this is the question. So this answer you have to write for this particular question. This question I am writing in box. Okay, for this particular question, what is answer? Arrow I am forming. This is answer. For this particular question,
how can you convert ethanol into ethanoic acid? This is answer. Okay, next, dehydration. So dehydration, D means removal, or hydration means water. So what you will do, you have to write ethanol, CH3 CH2 OH. Okay, on arrow write concentrated H2SO4 at 443 Kelvin or 170 degree Celsius. So it will convert into CH2 double bond CH2 plus water. It will convert into ethene. So this is important, one of the most important reaction. This question is coming in also case based. One ex-person has taken ethanol in science lab and he had put few drops of concentrated H2SO4 at 443 Kelvin. What will happen? इस रिएक्शन को एक बार इनसे फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं. आप इसमें से करिएगा. इथेनॉल लिख लीजिएगा CH3, देन लिखिएगा CH2. ध्यान रहे यहाँ पे आपने जो है OH इस साइड लिखना है. It is most easiest way. Please watch carefully. Please see carefully. CH3 CH2 OH. ये हमारे पास CH3 CH2OH, ये हमारे पास इथेनॉल है, ये हमारे पास क्या है इथेनॉल. आपने यहां से H और यहां से OH निकालना. ओके, यहां से H और नेक्स्ट कार्बन से OH. एरो का निशान फॉरवर्ड एरो. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 Kelvin or 170 degrees Celsius. So this HOH will form water. This C2 you have to make as it is. This hydrogen as it is. This hydrogen as it is plus water. Now this carbon has 3 bonds. 1 2 3. तो आप क्या करिए, यहाँ पे इसके 4 बॉन्ड जो है पूरे कर दीजिए. इस रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन नीचे है. आपने इथेनॉल लिखना है CH3 CH2 OH. CH2 यहाँ और OH नीचे, एक कार्बन से H और नेक्स्ट कार्बन से OH. तो नीचे वाला HOH जो है रिमूव हो गया. तो ये हमारे पास क्या बन गई, इथीन. क्या बन गई हमारे पास, इथीन. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4. ओके, प्लस वाटर. ओके, यहां भी आप लिख सकते हैं इथेन जो बनी है C2H4. नो प्रॉब्लम. ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, these two are most important reaction from CBSE point of view, HBSE and ICSE world. प्लीज इसको लिख लीजिए. Okay, this is important reaction. बॉक्स बना दिया, important. इसका क्वेश्चन क्या आएगा,
इसका क्वेश्चन आएगा, यहां लिखते थे हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेन। ओके, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेन, तो आप जो है ये आंसर देंगे CH3 CH2OH एरो कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, ये जो है हमारे पास इथेन बन जाएगी। इसका क्वेश्चन आएगा हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड, एंड इसका हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेन। चलिए इरेज कर रहे हैं। Then third reaction of ethanol with sodium, reaction of ethanol with sodium metal, Na। So बहुत सिंपल रिएक्शन है, तो आप रिएक्शन लिखेंगे CH3 CH2OH। ओके, इसके आप लोग 2 मॉलिक्यूल लेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको C2H5OH। ओके, दोनों में से एक लिखना है, तो हमारे पास सोडियम मेटल ले लीजिए 2Na सोडियम मेटल, दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज सोडियम मेटल, okay, this 2Na will come and replace this H displacement reaction। so एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, तो CH3 CH2ONA, O negative Na positive, it will form sodium ethoxide plus hydrogen H2, hydrogen gas, okay, this is a particular test for ethanol, this is a test for ethanol, okay। so याद रखना है आपके पास, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन ऐसे आता है सैंपल पेपर में, what happen when a piece of sodium metal drop in ethanol, okay। so then you have to write this particular reaction of sodium metal with ethanol। then we have combustion reaction
combustion reaction. Ethanol CH3 CH2 OH or C2H5 OH. Ethanol is highly sorry, inflammable liquid. It catches the fire easily. It catches the fire easily when ethanol CH3 CH2 OH reacts with oxygen, carbon dioxide, water, light, water vapor, light and energy is produced. So ethanol लिख लीजिए, ethanol CH3 CH2 OH CH3 CH2 OH, then oxygen. In the presence of oxygen, ethanol, this is oxygen, give rise to how many carbon we have? 2 carbon, CO2. Then we have 3H2O, 3H2O. Yes, 3 to 5, 3H2O, okay. And oxygen 3 to just 6, 7. Okay, so 2 CO2 will come. 2 CO2, 3H2O, 2 CO2 plus light plus energy. This is combustion reaction for ethanol. Water vapor, carbon dioxide, तो ये आपकी कंबशन रिएक्शन है इथेनॉल की, जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसे आप देख लीजिए, 20 सेकेंड है आपके पास। Then one more reaction. This we have done in previous video also. Reaction of ethanol CH3 CH2 OH, reaction of ethanol with ethanoic acid, CH3COOH. Okay, so it is a formation of ester. Okay, when ethanol
when ethanol reacts with ethanoic acid in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid H2SO4 to form ester is called esterification reaction. इसे जो है हम कहते हैं esterification reaction. So students देखेंगे हमारे पास क्या बनता है. हमारे पास जो है आप इथेनॉल लेंगे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड. तो इथेनॉल की रिएक्शन कर रहे हैं हम CH3 CH2OH. ये जो है हमारे पास इथेनॉल लीजिएगा, इथेनॉल, देन इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड आप उस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे HOOC CH3. ओके, CH3COOH. ध्यान से देखिए, यहां से जो आपने OH निकालना और यहां से क्या रिमूव करना है, H. H और OH अलग हो जाएगा. वाटर मींस OH and H will form water. OH and H will form water, H2O, and this on arrow you write concentrated H2SO4. Okay, so what is left? CH3 CH2 COO, then CH3. Okay, plus water. It is called ethyl ethanoate. Okay, or esters. So this is one of the most important reaction of ethanol with ethanoic acid. Okay, you can write like this: the reaction of ethanol with ethanoic acid in the presence of concentrated H2SO4 to form ester is called esterification reaction. देखिए आपने इथेनॉल लिखना है CH3CH2OH और इथेनोइक एसिड जो है रिवर्स लिखिएगा CH3COOH. इथेनॉल वाली साइड से OH निकालना और एसिड वाली साइड से H. रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू राइट टुगेदर CH3CH2COO CH3. It is called ethyl ethanoate. ओके, एक बॉन्ड दिखाया माइनस में. सो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारे इथेनॉल की वो ओवर हो चुकी है. सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे. थैंक यू वेरी मच.